तो ये खबर यूपी के संत कबीरनगर से है, जहां संत कबीरनगर जिले के चांदीडीहा गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि कोटेदार मनमानी करते हुए ग्रामीणों से बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवा लिया है और खाद्यान्न सामग्री नहीं दे रहा है। जून और जुलाई माह का कोटेदार खाद्यान्न सामग्री गबन कर लिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि प्रत्येक यूनिट पर उन्हें खाद्यान्न 1 से 2 किलो कम दिया जाता है। वहीं परेशान ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, आप सुनिए। ग्राम पंचायत चांदीडीहा में जून में अंगूठा लगवा लिया, उसके बाद कह रहा था कि 2 दिन के बाद राशन देंगे, और उसके बाद राशन सब लोग मांगने गए तो उसके बाद उसकी मां ने गाली देने लगी। उसके बाद फिर जुलाई में अंगूठा लगवाना हुआ तो 200-250 लोग को राशन दिया। उसके बाद भाग गया घर ताला वाला मार के। सब लोग अपना परेशान थे। जनता, गरीब जनता का जब राशन नहीं मिलेगा तो गरीब कहाँ से खाए जिएंगे। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.